Good morning, friends. Welcome back to another vlog. It's day 3 and we are pushing back to our home. So it's almost 6 in the morning and we are leaving to Noida back. So everybody is saddled up. Bike is refueled. Roll. Bye bye Bikaner. See you soon. Bala is waiting. Everybody is there. Good. So total distance is about 475 kilometer and we are targeting to reach by I think by at max 4 because बहुत रुकते हुए जाएंगे because too hot and too humid. दिन में टेम्परेचर 40 के आसपास पक्का जाएगा because आते समय भी टेम्परेचर 38-40 एटलीस्ट था. तो थोड़ा रुकेंगे बीच में कहीं ड्यूज में रुकेंगे. दिस इज द एक्चुअल प्लान एज ऑफ नाउ. रेस्ट तो डिपेंड्स. अभी मॉर्निंग में देयर इज अ परफेक्ट इंसिडेंट हैपन. समीर जस्ट बॉट हिज कीज फ्रॉम द रूम एंड समहाउ ही फॉरगॉट कि उसने बाइक ना चाबी को बाइक में लगा दिया है. उसके बाद में ही स्टार्ट सर्चिंग फॉर द की और उसको ये नहीं पता उसकी बाइक की चाबी उस गाड़ी में लगी हुई है. ही शाउटिंग ओवर द होटल एंड एवरीवन कि चाबी खो गया एंड द की इज इन हिज बाइक ओनली. तो रजत इज एट फ्रंट, देन आई थिंक नहीं रजत, देन समीर, देन अयन, देन दीपक, देन सोनल एंड देन वरुण एंड द लास्ट वन. दैट्स द एंटायर convoy. So safe journey. When your time comes, don't postpone it. When others down and out, you don't condone it. Yourself is your toughest opponent. When your moment comes, grab hold and own it. Never let go, stand tall and hold tight. Overcoming obstacles is the objective in life. Down is overnight, and until then you shine bright. Cause inside your head, on goes the light. Ignite. Play the intuition upon the stars in the night that glisten. To you they listen to me. Look at this beautiful sun. बड़ा मुश्किल होता है ऐसे देखना. I don't know whether GoPro will justify the view. क्या कैप्चर करेगा, but this is so beautiful. Wow. We just stopped for the breakfast and we have a breakfast at this Khurja restaurant and rooms. So we have parathas and all. It's a good place overall. Somehow we are manageable to get the tea also. So far we covered 125 kilometers and from here we have to go another 375 kilometers, 70 around. So थोड़ा ह्यूमिड बढ़ता जा रहा है. I think it's about 30 degrees as of now and time is 8:30 in the morning. So let's see. अब at least 120 kilometers और राइड करेंगे. Then we'll take a short break because we need to keep hydrated in this heat because temperature is too high and it is going to be 40 degree or more than 40 degree by the day. So we are planning to take a break after riding 150 kilometer at least. तो मॉर्निंग में जितना कवर कर सकते हैं उसके बाद तो need to stop after every 50 kilometers to keep ourselves hydrated. So let's roll. हाँ यही रहेगा. हाँ
फाइनली गेट अ पिट स्टॉप एट फाटक। यहाँ से आई थिंक पहले आएगा भिवानी। भिवानी से अबाउट 35-40 किलोमीटर। उसके बाद फिर रोहतक देन विल टेक एन ईपी, फिर वाया ईपी देन विल गो अहेड। तो स्टिल 250 किलोमीटर्स टू राइड। एडवेंचर टूर वालों को तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम। इवन दी वरुण इज ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम बिकॉज हमारी बाइक आर नॉट मेंट फॉर दिस रोड। प्लस जो टायर भी है मेरा दैट इज़ नॉट सो प्रॉमिसिंग, अपने लास्ट वर्ज पे है। और यहाँ पे अगर कुछ होगा बाइक को तो थोड़ा टफ है। आई डोंट नो कितने किलोमीटर ये ऐसे ही राइड करना पड़ेगा। हाँ, 20 की स्पीड पे। आफ्टर दैट रोड वी जस्ट एंटर्ड अ सिटी बहल। आई डोंट नो कि गूगल ने यहाँ से क्यों एनरूट किया है, बट स्टिल लेट्स सी। माय गॉड, ट्रैफिक जैम, सबसे गर्मी, टेम्परेचर अबाउट 40 डिग्री, ऊपर से ट्रैफिक। लेट दी व्यू, ऐसा लग रहा है पेड़ों की गुफा के अंदर जा रहे हैं। वाह, पूरा शेड में है रोड, पूरा रोड शेड में, पेड़ों का पूरा शेड बना हुआ है। अंदर से हम लोग निकले हैं, दोनों तरफ जंगल है और ये एक पतली सी रोड है क्योंकि सीधा में यहाँ से एंटर करेंगे आफ्टर 70 किलोमीटर्स रोहतक। देन रोहतक से देन वी विल रीच टू दिल्ली। बट दिस इज़ तो मतलब वेरी डिफरेंट है। पीछे से काफ़ी ख़राब था रास्ता, मतलब आफ्टर 25 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। द रोड इज़ लाइक दिस ओनली, लेस ट्रैफिक, जैसे नो पब्लिक ट्रैफिक बेसिकली, नो बस नो ट्रक, छोटे मोटी कार्स हैं दैट्स इट, एंड वी आर द वन हु आर राइडिंग ऑन दिस रोड। सो फार सो गुड, इट्स अ गुड रोड। यानी फेंसिंग हो के आई डोंट नो किस टाइप का जंगल है अभी तक के लिए तो। When your time comes, don't postpone it. When others down and out, you don't condone it. Truth be told, yourself is your toughest opponent. When your moment comes, grab hold and own it. Never let go, stand tall and hold tight. Overcoming obstacles is the objective in life. Doubt is overnight, enough to then you shine bright. Cause inside your head, on goes the light. Pray the intuition upon the stars in the night that glisten. To you that listen to me, you instead of wishing. When your time comes, don't postpone it. When others down and out, you don't condone it. Truth be told, yourself is your toughest opponent. When your moment comes, grab hold and own it. When your time comes, don't postpone it. When others down and out, you don't condone it. Truth be told, yourself is your toughest opponent. When your moment comes, grab hold and own it. Never let go, stand tall and hold tight. Overcoming obstacles is the objective in life. Never let go, stand tall and hold tight. Overcoming obstacles is the objective in life. Doubt is overnight, enough to then you shine bright. Cause inside your head, on goes the light. Doubt is overnight, enough to then you shine bright. Cause inside your head, on goes the light. We just take this turn. From this turn, the Rohtak is 59. Rohtak is 59 means Rohtak 59. Then we have another 125 kilometers in. So we still need to go 175 kilometers. Fingers crossed अब आगे रूट ख़राब नहीं होगा, बिकॉज थोड़ा बहुत हो सकता है रोहतक में अगर हम सिटी को क्रॉस करेंगे थोड़ा रूट ख़राब हो जाता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो रूट ख़राब होगा। तो आगे तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन। दिस इज़ ऑल्सो द न्यू एक्सप्रेसवे व्हिच हैज़ बीन डन रिसेंटली। सो फार सो गुड।